I'll just share my PPT. So I welcome you all on behalf of everyone, and this is kind of, I must say, a platform wherein I, on behalf of everyone, and especially on the behalf of myself, welcome you all to the seminar, or we can call it an interaction or a platform of interaction on public speaking. Now, with this term, public speaking, here, or I must say, we all are here for just one sole purpose. So, hello, kids. Are kids there, or it's a mixed crowd? I think there Mix, are kids, a lot of kids, right? mix. Mixed crowd. So, anyways, I believe that being child or having that child curiosity like a child makes us alive. Because if we all become like adult or developed, wherein we stop our process of learning or growing, there is no meaning in the life, right? So let's be a child. Let's be like in children, and let's try to interact, try to get together, try to know, try to mingle up. Because until unless we don't be that, have that curiosity like a child, we may not be able to interact so formally or so perfectly, right? So again, I am a child, so with the same manner, I believe you all as an elder or as a more mature child. So I welcome you all, and let's try to know who am I, and if possible, if I cannot force, see, because the public platform, I don't want to force anybody, anyone except the school management, anybody who would like to come randomly on their own and would like to introduce, you are most welcome. Because now I don't want to force, and let's see after the presentation or after the interaction what changes happens, right? Because probably now one or two might come, but the chance or the objective is after the presentation, I or the management or everyone wants maximum participation. So let's start from me. As Gupta sir, really thankful to you that you introduced me almost. Yeah, yes, I am an educationist. First of all, I am a teacher, and being a teacher, I believe more than a teacher, I am a student, because I learned a lot. I learned a lot from my children, from students, because again, that is the age gap, generation gap, that keeps us differences, that keeps us separated. So being a teacher, first of all, I myself kept myself as a student, and I tried to gather more and more knowledge from my children. Second, with the same concept of, or same ideology of knowing myself from my children, being an economics and being an history teacher, I started podcasting on storytelling. Because stories are one of the best ways of communicating to people. So along with that, I am a teacher and I am a storyteller. And yes, when you get into process, you start interacting with people. And of course, like great people like Gupta sir who give opportunity. So I train kids also. I try to train school kids or college kids on communication, on various other aspects. So these are the three major aspects or major characteristics, I must say, which I carry with myself as a teacher, as in podcaster, including storyteller, and a trainer. So anyone who would like to introduce yourself in any funny or any more creative way, you are most welcome. Anybody, just for 5 to 10 seconds, if anyone can. And they can write in the chat also, I'm just sir. waiting for That will anyone. be fine. They can write in the Right, chat. right. All right, you can write in the chat just to introduce yourself, so that we can know that yes, you are. And I request to be an active participant, because until unless there won't be interaction like kids, there won't be a curiosity like kids, we won't be able to learn. That is the reason students or children go to school. We don't go to school because we are now that mature, so we don't go to school to learn. We go to teach, right? But today, let's all of us become kids and try to learn, try to mingle up, try to play together, right? With this positive note, I would like to move ahead with this term or the ideology of my life is, believe it, you are the best. Everyone is best. We all are best. This is the crux which I would like to say in the beginning till the end. At any point, anywhere in the life, if you believe that we are a bit lower than others, you are gone. Believe me. I'm not a philosopher, I'm not a scholar, I am not a prime minister, no one. But whatever I've learned through my learning process in the life, I believe this mantra really works. And this is not something which came into my mind.
This I developed, this I learned by reading, by knowing, by understanding through various sources. Every successful philosopher, every successful man, woman, anybody, any professional, they all said we were not able to achieve until unless we don't or we didn't believe in us. As soon as we believed us, as soon as we trust or we started trusting us, we started achieving. So with the same, let's hear this small poem. This is a Hindi poem. So I request everyone, probably you might have heard this because it's a very famous poem. But this, with this note, I would like to start because you all are best. With this, please listen this. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। Right. So with this, I believe the message was somebody is trying to write something on the this thing. No? Can you all hear me now? Yeah, please continue, sir. Right, sir. Right, sir. Thank you, sir. So this poem is too inspiration. It actually ignites that fire or that inspiration in us that we all are best. And every statement that is given on this has a connection with all the aspects of life. And as today we are going to speak more on the art of public speaking, the art of speech, the art of interacting with huge crowd. And believe me, this huge crowd is completely unknown to you all.
It's for everyone. Whenever anybody goes and addresses the crowd, for example, today, whomever the crowd is, whatever the crowd is, neither I know everyone, nor you, every one of us, every one of you know me, right? But we are still trying to communicate. And what is that we're going to leave at the end is good, bad, or fine impression, right? So we are unknown to everyone because we cannot know everyone. And where children or everyone of us who are going to interact with the huge crowd, with a big crowd in the life. So this thing actually matters. Whatever is said in the particular song or poem, that's we all are the best. No one of us is poor. But here, I would like to correct on one part. I am the best should be the confidence. It should not be the ego, or it should not be the anyone. Okay, it should not be the ego, or it should not be the overconfidence. Just that one statement we all should remember. Because if we all believe that I am the best and we start fighting with others, then that is the most destructive thought which we all have. This is what happening somewhere in the world. This is happening that I am the best. How do you claim it? We all are best. We have to understand this thing. We all are best. We all are best in some or particular other things. That is the reason when I started my speech, I said, I am a teacher, that is fine, but I am a good time student. I am a student of my students. I learn from them. I try to understand what they believe, what they have for me, because every student teaches me something or else. It is not that I am the perfect. No. If we all believe that they are best, I am the best, let's learn from each other. This world will be the wonderful world, right? So with this, let's jump into something called as speech, or we can call it the communication. So this is something again a fact. I'm not going to present something which is very unsystematic. This is a fact that of any speech of anything, only 7 to 8 or 10% sometime, if a speech is very wonderful, it carries certain value. Rest all is non-verbal communication. That is, how do we present ourselves? And in today's world where there's a huge crowd for, or huge demand for, uh, I must say, online learning, online platforms, or I must say, where we are not interacting, non-verbal communication plays too important role. Or in very small case, I must say, non-verbal communication is just the packaging, is the presentation, right? I remember, like, this is a very small example, a very funny one. I have a daughter. She's around 4 or 5 years old daughter. Whenever you go to the market, you know, the first thing that she picks up is the most colorful, the most attractive thing. We convince her that beta, this is not of your choice, ये आपके लिए नहीं बना है, but she has no meaning. She just want to pick whatever looks colorful, whatever looks so crazy. Rather, that component or that good is of no use for her. But what attracts that child is the packaging, the non-verbal. Verbal in that case is when she opens it, like us, we are mature, right? We are mature kids. Like us, when she opens it, she tries it. Like ghadi, we assume that pehle istemal kare. We first, what we do, even for tomato, for potato, we try to see how that looks. Then only we keep. But what about children? They don't use. They just feel attracted. Same way for vegetable, or for pulses, or for rice, or for wheat, we might check, but for many things we don't check. We go on the packaging because we can open that. How many of you have purchased soaps or detergent by opening the packaging and seeing it how it looks, then you purchase? No. We go on the packaging, we go on the outline, we go on the labeling of the packaging or the product, right? So if we have a wonderful packaging, we can do miracles. And packaging is different for, or it varies from sector to sector. It varies from people to people. It varies from industry to industry. For students, you all must understand that in your age, in your level, in your area of interest, packaging simply means how do you deliver, how do you present yourself, how do you behave, how do you let others judge you. Because believe me,
Every child, whomever, either it's a 1 year or it's a 10 years or 12, 14, 15, 20, you will be judged, you will be seen everywhere. Now here I don't want to cross yourself that get judged by people. We have to be judged by people. We cannot say don't judge me, but that judgment, positive judgment, should have an impact on you. You just cannot be like, why are you judging me? People will judge you, because then only we have our values, right? But others intentions should not have an impact on us, but we should perfect for that. For example, if you go to school, if you go to any place, there's a very common thing, when we interacted, like some of the children asked me when I was training, sir, how packaging matters. We don't believe in packaging and all that stuff. Well, fine, wonderful. Don't believe in that. Let's prove it that it matters. Suppose you have a religious festival at your place. What dresses do you prefer? Automatically children started saying, sir, I will go for, girls started for their own ways of dressing, boys started talking about kurta, about some started talking about these safaris and whatever the dresses they have, sherwanis or kurtas and all that stuff. Then I said, why don't you, or why can't you believe, sitting in the religious function, especially Diwali puja or Dashera puja, in shorts and just a t-shirt like this? They said, no sir, it doesn't look good. कहाँ अच्छा लगता है ऐसा बोला. बस when you believe that you are in the religious function or you are in the marriage function, just assume yourself that in the marriage you are going on shorts and t-shirt, and you assume that people will start, मैं क्यों मायने करूं? नहीं, you have to understand, you have to agree. If people are laughing at you, you are making some mistakes. So packaging is very important. Packaging does not mean sabun ka ya just vegetable ka packaging. It means your presentation, right? This meaning should be very much clear. हम कैसे दिखते हैं, हमारा क्या प्रेजेंटेशन रहता है. Basic presentation should be there for everyone, because this is known as discipline. Packaging does not mean fancies. I'm not saying everyone should have a Rolex watch or everyone should have a Armani's shoes or jackets. No, that is fancy. That is something which nobody can say. But at least have a decent dress sense, have some discipline, and that way we start preparing for public speaking. It also has certain kind of discipline, certain kind of, I must say, involvement, certain kind of packaging required for everyone in the public speaking. With this, let's try to know what is public speaking. So can people participate in this, or they can just chat the answers? How to go about it? Chat. They can chat. They can chat. So can I have an access to chat? Can I see? Yeah, you can see. All right. So here I would like to ask, what is public speaking? Anyone, and please involve yourself. How do you assume, or how can you involve in public speaking? That is most important. Please participate, because if I just go on speaking, it might get bored. Then again, this concept of public speaking, which I'm going to state in the further slides, that involve people. Fortunately or unfortunately, we are unable to involve people to that extent, because believe me, if we would have been meeting in a crowd, in a stage, or in a platform, where in a room where we all must be interacting, it might have a wonderful impact, but not an issue. Here also we can involve ourselves. We have a chat box open. Please share your views on what is public speaking, so that I can know when I should start speaking. What is public speaking? At least one answer. Speaking face to face to live audience. RDB Vansh Kothari, 9B. Wonderful. Face to face to live audience. Wonderful, wonderful. Anyone else? Neelam Paliwal, speaking in front of public. Wonderful, right. Speaking in front of public. Wow, many answers now. Speaking with full confidence. Yuk Pancholi, Sonika, communication to masses. That reminds me, mass communication. So Sonika, this is
Communication to masses, wonderful term that you gave me. That is the mass communication. Although that's a different topic altogether. But yes, congratulations, wonderful job. Speaking freely, speaking confidently in front of people, wonderful. Clap for you all. Wonderful job. That's great. So now let me take this. Really good. Public speaking was considered to be a part of the art of persuasion. Wow. Wonderful. Jaipal, present before others. Really great. So you have wonderful children. Actually, they are too knowledgeable. They know a lot of things already. Wonderful. So now, public speaking, as students rightly said, interacting with masses, talking to people confidently. Yes, you actually and honestly gave all the answers to the question. Talking or interacting with public. Now, here I would like to add something on this. Public speaking till now has been considered as a speech of a politician, a speech of a school principal, a speech, probably I must say, no, I should not say speech, but a teaching, a lecture by a teacher. These are till now considered to be the public speaking, right? But believe me, these are a small components of public speaking. They are not completely public speaking. Public speaking is, yes, speech by anyone, either by prime minister or by president or by principal or by your friends in the assembly. They are public speaking, right? They are exactly public speaking, but they are one part of public speaking. Another part of public speaking is songs, poems by your favorite, I must say, your singers. Like, for example, in today's generation, they have a huge craze for new kind of singers like Neha Kakkar or Badshaw or Honey Singh or anyways. So this song, what they do? They sing on the stage, and when you see the crowd, they are crazy. They have 1,000, 1,500. I don't know, but I read that there's a crowd of around 5 to 10,000 for one singer. It's unbelievable. 5,000 people are in one stage or in one platform listening to one guy singing on the stage. Look at that confidence. Just understand how much pressure it creates on the public speaker, right? It might create, because when you see everywhere you are seeing public, you feel scared. If I just missed on one particular point, they may start throwing eggs and potatoes and bananas as if they are carrying that. लगता है कि वो अंडे लेके आए हैं, लेकिन लेके नहीं आए हैं. But still, that singer does the miracle. How? क्यों? वो हम देखेंगे. But still, if you have answers, you can write in the chat box. But there is a way. And that way is not rocket science. That you all know it. It's just that we don't implement that. गाना गाना, भाषण देना, डिबेट करना, ये सब पब्लिक स्पीकिंग के पार्ट है, जिनको हम मानते ही नहीं थे. हम कहते नहीं नहीं कहाँ होता पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग में ओनली वो स्पीच देना, भाषण देना, घर में आके बैठ गए. नो. एंड यू विल बी सरप्राइज इन कमिंग स्लाइड्स. मैं आपको कुछ ऐसे बताऊंगा पब्लिक स्पीकिंग के बारे में जिनके बारे में तो सोचा ही नहीं होगा आपने कि अरे हाँ, आप रोज उनके साथ खेलते हैं, रोज आप वो काम करते हैं, बट स्टिल आपने सोचा ही नहीं होगी मेरे पब्लिक स्पीकिंग काम कर जाएगा. बट दे आर, और दे विल हेल्प यू अ लॉट इन इंप्रूविंग योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी हम लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बात करी. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड पब्लिक स्पीकिंग, बहुत पब्लिक स्पीकिंग. नाउ लेट्स कम बैक टू स्कूल, राइट? आई हैव अ क्वेश्चन फॉर चिल्ड्रन. This is a question for all of you. Let's try to know each other and let's try to be bit of out from the public speaking wala segment and try to know what are you missing this vacation the most. I just need answers in the chat box. Chat box. Everyone, what are you missing? Everyone, please write. Everyone. Please write. Involve yourself. Kids, understand this thing. I should not have to speak. You have to involve yourself. Until you don't involve, there is no meaning of having a session on
public speaking. The way you are writing, this is also one of the public interaction, right? You're writing on this. I'm getting answers. Very good. Traveling by Mansi, Archana by meeting my friends. Oh, Sony traveling. You are missing all these. Traveling to where? Meeting my friends where? At your nani place, your dadi place, your neighbor, your where? Where are you missing them? Brahman. Wow. Vinod Loharji. Wonderful. Brahman picnic. Really, we are missing that, all that stuff. And not this. I think from last 1.5 year, we are missing this picnic, going out. I am missing even going out to the malls and seeing, because I haven't seen mall from last almost 1 year. Even in Udaipur, we have this segment, or we have this mall. I haven't seen that from last 1 year. How it looks. Playing with friends. Very honest student, Tanvi. Playing with friends. Very simply, I'm missing playing with students, friends. How many of you are missing any food? No one is foodie here. I'm missing pizzas. I'm missing that McD's and everything. One of the things we miss most about traveling is meeting amazing people along the way when we go somewhere new. Very good. Travel, family, and shopping, restaurants. What is, I don't know the range of these children, but do you guys go out for cricket, for football, and you play, or any other game by children? How do you involve yourself during vacation? Because vacation का मतलब है किताबें बंद, हम ये मानते हैं, right? I'll speak on that also. किताबें बंद का मतलब क्या होता है और enjoyment का मतलब क्या होता है? We'll talk about that. But how many were missing those sports? Missing cricket a lot. Okay, Kavi Jain, missing cricket a lot. You watching cricket or playing? Because both are banned as if now. IPL is on the stop, playing is on the stop. Anyways, this is a wonderful way, both, right? Missing cricket, playing, wonderful. So with this, I believe we all are missing something. When we are missing, can we do something about it? No. So let's enjoy what we are having and move ahead. What can we do then? No, we don't have any other choice, right? So we should enjoy what we have. And believe me, when you're missing these things, try to utilize the time that you have now on missing these things on something else. Now, this question again, another question for you all, just to have a free mind. What are you missing the most in your school? You can see those photographs, or I must say in the pictures, you can see some kids. This is the canteen area. I believe in your school or anywhere you must have seen canteens or you have enjoyed. Other side in the crowd, they are ready for photographs. Click me. And the best place in the school, the best place, even for me as a teacher and as in for a, because in my when I was teaching, I used to maximum have my classes outside these classrooms in the grounds, because ground is a wonderful place. You can go there, you can play with children, you can, actually we can make them learn more in the ground. So ground, the most favorite place of children. They all are missing it, right? We all are missing grounds, that spicy, that fighting with our friends in the canteen area. Now what are we doing? We're just sitting idle at the home eating food. Miss kar rahe, nahi kar rahe. We are missing, right? Keep missing it. Keep missing all these things, because ये चीजें वाकई में अब ये, at least to the new generation like my daughter, probably we don't know when schools are going to open. ये हमारी जो बच्चे हैं, मेरी बच्ची जैसे, उस जनरेशन के लिए तो ये एक था वाली बात हो गई कि हमारे स्कूल में कैंटीन होता था, हम जाते थे, प्लेग्राउंड था, राइट? So I don't know when that how will become a hair, but hope so it should become soon, right? So with this, let's jump on the public speaking wala section. Now, these are some of the ways of public speaking, traditional way of public speaking, which we all should know and we all know it also, right? Now I'm going to speak in detail of all this, because ye har bacche ke liye, if there are teachers, if there are parents in this meeting, if there are students, this is important for all of us to understand this. This is the wonderful traditional method of public speaking which we all are having in our school. I have seen, I don't remember the names. I was trying to recollect the names, but I didn't get the names. Maximum of the actors or maximum of the
drama people, from the music industry, when asked them कि first time आपको कब लगा था अपने interest, अपने hobby के बारे में, the honest answer was in my school time. Really, you can see the interviews of many scholars. They say हम जब स्कूल में थे तो मैंने कभी गाना गाया, या मैंने कभी कमांड दिया, या मैंने कभी कोई स्पीच दी. That time I realized कि okay, I can do this. तो वो मेरा हॉबी बना, और हॉबी आज मेरा प्रोफेशन बना है. This is by many great actors also, especially in drama field. जितने भी actors हैं, then they should know drama. They go get into drama. There's a school called as now National School of Drama, NSD. They enroll themselves in that, and then they just try to, get into the skills of drama. But this craze of acting, it inculcates in them when they are in the school. So school plays a wonderful role, an important role in inculcating all these things. हम क्या होता है कि बच्चे होते हैं तो वी बिलीव कौन जाएगा स्टेज में, क्या होगा वो स्टेज में जाके एक चिट पढ़ने से. भैया वो चिट नहीं है. You don't know when that thing will crack in your mind and you can be the scholar, when you can be the great speaker. We don't know what is that. So the most important, I believe, the traditional method of public speaking, which I am missing, which you all must be missing, is your school assembly. I think you all are missing that. That crowd, gathering in the crowd, मिलते ही दोस्तों से मिलना, मतलब it's like a first, मतलब दिन की शुरुआत है वो. आप स्कूल जाते ही सबसे पहला काम क्या होता है? कुछ नहीं, दोस्तों से मिलना है. क्यों? क्योंकि असेंबली है. असेंबली वाज द क्रेज. मतलब जहां भी मैंने जितना भी स्कूल में काम किया, बच्चे तो असेंबली में इतने खुश होते हैं. ओनली रीजन इज वी गेट अ चांस टू मीट आवर फ्रेंड्स, एंड दैट टू फेस. हम अपने दोस्तों के साथ में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, चिट चैट कर सकते हैं, इतना मजा आता है. उसके बाद डिपेंड करता है उस पब्लिक स्पीकर पर कि वो कितना इन्वॉल्व कर पाता है. जैसे हम देन वीड गो ऑन दी इंटरैक्टिंग on the ways of poems, prayers, national anthem, pledge, news. All these are the part of our traditional methods of interaction. Just a second. All right. So again, coming back to on this. So school assembly, it plays a very important role. Believe me, whenever the school gets open, try to get into school assemblies a lot. Because school assembly में सबसे best part और सब चीजों से मैं आपको बताऊं, स्कूल असेंबली में you have a crowd and that crowd is your own crowd. एक भी जना ऐसा नहीं होता जिसको आप रोज नहीं मिलते हैं. आप उनको रोज मिलते हैं, रोज जानते हैं, रोज बात करते हैं. We'll talk about the fear later on. Let's talk about the options that you have. These are the relevant options that you all have, right? So please be active in the assemblies as much as possible. Second part, which is done in many schools, in many classes, but children fear about it, is the group discussion. You can see 3 girls and 1 boy with their hairs up. That boy and that girl, those girls, they are a part of the school or classroom discussion. Why it is important? Whenever teacher gives us assignment to discuss something, to talk on something, we'll start chatting on something which is not relevant at that point of time. हम वो बातें करते हैं जो important उस समय नहीं है, लेकिन हम बातें तो करते हैं. ऐसा कोई नहीं है जो टीचर ने कहा हो कि डिस्कशन कर लो और हम चुप बैठते हैं. नहीं, we all chat, we all talk. It means
हम बात कर सकते हैं. This is right. Whenever, suppose when I'm teaching history, and if I say, okay, you four students, you sit together and discuss about the beginning of the Mughal empire or Mughal era in the country. Children, if this do not talk about the Mughal empire and they start discussing about, अरे पता है अभी कौन सी मूवी आ रही है, नया नया वेब उसका इसमें Amazon Prime में या Netflix में नई कुछ आ रही है, wow, what are you doing? You are discussing. When you are discussing about Amazon Prime or discussing about something else or movie or a song or anything, it means you are talking. जब आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप बात कर सकते हैं. The problem is, जब हम बात करते हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? बिकॉज टॉकिंग अबाउट द मूवी, टॉकिंग अबाउट योर फेवरेट एक्टर, talking about what happened yesterday night, will that give you money? Will that give you importance? Is that important at this point of time? The only problem with ourselves as in children or as in adults or anyone is we don't talk right thing at right moment. यही गलती है. मैं हिंदी में बताता हूं. हम प्रॉब्लम या हम गलती ये करते हैं कि हम सही चीज को सही समय पर बात नहीं करते हैं. बात करना गलत बात नहीं है, बात तो होना ही चाहिए, वही हम बात कर रहे हैं. पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या है कि इंटरैक्टिंग मास के साथ, बहुत बड़े क्राउड के साथ बात करना पब्लिक इंटरैक्शन है. द प्रॉब्लम इज वी डोंट टॉक राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जैसे टीचर ने कहा हिस्ट्री की डिस्कशन कर लो, आप बात कर रहे हो मूवी की. मूवी की बात अभी नहीं चाहिए, राइट? ट्राई टू डिस्कस विथ योरसेल्फ ऑन द रिलेवेंट टॉपिक. ये की इंपॉर्टेंट है. नाउ चिल्ड्रन आस्क, ये पूछा गया है मुझसे भी कि सर हम रिलेवेंट बात क्यों करें, क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा, सही क्वेश्चन है. होगा ये कि व्हेन यू टॉक रिलेवेंट टॉपिक ऑन रिलेवेंट टाइम, आपका अपने आप पर, आपका अपने ऊपर एक कंट्रोल आएगा. You have a control on yourself. You have a knowledge. When you have a knowledge, you have a talent to control your emotions. That is extremely important in the life. आपको, जैसे for example, if you are driving, you should drive on the left side. Why are you driving on the left side? Why do you go on the right side? Because that is made. That is a rule. That is something which is made for us. क्यों बनाया गया? अगर सब जने अपने हिसाब से गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा. Same way, if we don't discuss on the relevant topic at relevant point of time, probably हम वो चीज अचीव नहीं कर पाएंगे जो हमको अचीव करना है. अगर आप हिस्ट्री की क्लास में मूवी की बात करेंगे तो हिस्ट्री की बात कब करेंगे? तो आपका हिस्ट्री का बैकग्राउंड छूट गया. आपका एक चीज में जिसमें आपका इंटरेस्ट था उसमें आप बढ़ते गए, लेकिन एक चीज छोड़ते गए, क्या पता वो आपको आगे और ले जाता. सो टॉकिंग राइट एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड थर्ड इज, जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है योर डिबेटिंग स्किल्स. डिबेट, डिस्कशन, बिकॉज आज हर जगह पर डिबेट है. नाउ देयर इज वन मिसकंसेप्शन, आई मस्ट से, एक बहुत गलतफहमी है डिबेट के साथ, और ये है कि डिबेट मींस फाइटिंग. लेट्स फाइट. डिबेट मींस गुस्सा होना, टेबल में मारना और चिल्लाना. नहीं, डिबेट वो नहीं है. हम डिबेट घर में भी करते हैं. हम डिबेट, वी डिबेट विद आवर पेरेंट्स, वी डिबेट विद आवर फ्रेंड्स, वी डिबेट विद आवर टीचर्स, वी डिबेट आर अमंग सेल्फ. डिबेट मींस लॉजिकल डिस्कशन, सिंपल एज दैट. आप एक मुद्दे को लेकर के जब आप रिलेवेंस, एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आप डिस्कशन करते हैं विद एनीबॉडी, दैट इज कॉल्ड एज डिबेट. डिबेट का सिंपल मतलब है, आपके साथ, आपके पास अगर कोई रिलेवेंट टॉपिक है, आपके पास अगर कोई मुद्दा है जिसके बारे में आपको ज्ञान है, आपके पास उस ज्ञान को सपोर्ट करने के लिए फैक्ट्स और फिगर्स हैं, दैट इज डिबेट. और डिबेट से ही इंसान एनिमल से अलग है, क्योंकि हम जब सोचते हैं तब हम डिस्कस कर पाते हैं. आज मुझे अगर कोई बोले कि आप कोई ऐसे टॉपिक जिसको मुझे पता ही नहीं उस पर डिस्कशन कर लो, क्या मैं कर पाऊंगा? नहीं. आई माइट हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, बट क्या मैं बात कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा. आज अगर मान लीजिए मैं कभी यूएस गया ही नहीं और कोई मुझे पूछे कि यूएस के रोड्स के बारे में बात करते हैं, मैं क्या बात करूंगा यूएस के रोड्स के बारे में? मुझे पता ही नहीं यूएस का रोड्स कैसा है, दिखता कैसा है, कहाँ होता है, आई डोंट नो. सबसे पहले
डिबेट करने के लिए वी नीड ऑल नॉलेज, और नॉलेज कहाँ से आएगा? बाय रीडिंग. व्हेन यू रीड अ लॉट यू गेट द नॉलेज. एंड व्हेन यू डिबेट, मैंने इसलिए कहा डिबेट मीन्स लॉजिकल डिस्कशन. व्हेन डिस्कस विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप कहें कि फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में मेरा ये मानना है, क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्स और फिगर्स इसको प्रूव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि इस साल रेन, जो बारिश है वो अच्छी होगी. मैं कौन हूं? आई डोंट गिव रेन. मैं तो बारिश भगवान नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? आई एम नो वन. देन आई कैन सपोर्ट. आई एम सेइंग दिस विद द रिलेवेंस ऑफ दिस रेफरेंस. ये मेरा रेफरेंस है, मैंने ये अखबार में पढ़ा था, या मैंने ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इसका है उसके मैंने रिकॉर्ड्स देखी हैं, विच प्रूव दैट दिस ईयर देयर माइट बी अ गुड रेनफॉल. अगर मैं ये बोलता हूं तो इसमें गलत क्या है? चिल्ड्रन आर ऑफन मिसकंसेप्चुअलाइज्ड, दे आर ऑफन मिसगाइडेड कि डिबेट इज रॉन्ग, डिबेट तो नहीं होता. डिबेट सर, डिबेट क्या होता है? सर मैं फाइट करूंगा. फाइट इज कंप्लीटली नॉट रिक्वायर्ड. क्योंकि अगर आप सच हैं तो लड़ाई क्या जरूरत पड़ रही है? लड़ता कब है इंसान, या चिल्लाता कब है इंसान? जब उसके पास उसके रिलेवेंट टॉपिक्स के बात करने के लिए पॉइंट्स नहीं है. सो debating skills should be inculcated in our students, in our everyone, I must say, because अगर debating skills होगी तो आपको कोई हरा नहीं सकेगा. Right? With these traditional methods, let's look at some more other methods. This is, I must say, it has very many various names. Some call it peer teaching, some call it classroom teaching, some call it, friend to friend teaching. But I believe when one child takes the initiative and starts teaching in the classroom, or when one child acts as a teacher in the classroom, and for that particular time, if teacher stays back, ठीक है आप पढ़ो and मैं आपको देखता हूँ या देखती हूँ, that way, that is the best way for development of the child. Why? Because child और या बच्चा जो है वो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है. और अगर उस समय अगर बच्चा 5 to 10 minutes भी बोल पाया तो that child is commendable, because that child is speaking in front of the subject expert. और क्या चाहिए? अगर कोई इंसान एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ में सामने बैठ के बात कर रहा है, it means that child or that individual has done a lot of research on that. Right? So teachers, of course, they do it a lot. Teachers do it. Some call it peers, some call it teaching in the classroom. But the problem which I believe, which I faced for some time, was students do not participate. Why? वो आगे आएगा. I'll discuss that in detail कि हम क्यों घबराते हैं. पूरा स्लाइड है हम क्यों घबराते हैं, और इसके बहुत फनी रीजंस है जो आपको पता ही है. तो घबराना नहीं है. जो भी रीजंस है, keep that out. Just try to be the leader, try to involve, try to speak, because जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम नहीं कर पाएंगे. And the last one, which is given over here, just a second, is the plays and various functions. हम जब स्कूल में होते हैं या whenever we are in the school, the best thing that we all get is the access to our various activities. That is, sometime or other, we have annual functions, we have Founders Day, we have various religious activities going on. Diwali मना लिया, ईद मनाया हमने कभी कोई और फेस्टिवल मना लिया. ये क्यों मनाते हैं? Why do we celebrate that? ऐसा नहीं है कि उस समय को या उस आधे घंटे के लिए हमको वेस्ट करना है तो हम कुछ कर रहे हैं. नहीं. These are the crux of the learning. Whatever you learn, the most learning is done is this point of time. The best friendship is done at this point of time. The best leaders come out at this point of time. जब एक एनुअल फंक्शन हो रहा होता है स्कूल का तो सारा स्कूल उसमें इन्वॉल्व होता है. कुछ बच्चे अपने आप निकल के आते हैं कि सर मैं हेल्प करूंगा या मैं हैंडल करूंगा. Who are they? They are the leaders. Some students perform extremely good. Who are they? They are the actors. Some students, they recite poem wonderfully. Who are they? They are the poets. Some students, they sing songs wonderfully. Some plays music. तो ये कौन है? These are the artists for whom we go to the market
and we give or we buy tickets to see or to listen them. Who knows कि एक बच्चा जो आज बैठ के स्कूल में, या आप में से कोई एक जो आज बैठ के पियानो बजा रहा है स्कूल के एनुअल फंक्शन में, कल को वो कोई रॉक स्टार बन जाए. और सब ऐसे ही बने हैं. कोई भी रॉक स्टार ऐसा नहीं जो घर के अंदर बंद रहा और वो अचानक रॉक स्टार बन के बाहर आए. नो, ऑल ऑफ देम हैड बीन टू स्कूल, ऑल ऑफ देम हैड स्टडीज ऑलमोस्ट, ऑल ऑफ देम हैव परफॉर्म्ड समवेयर. तो छोटा मोटा परफॉर्मेंस करते करते ही वो रॉक स्टार बने हैं. हु नोज, कोई आप में से कोई बन जाए. We don't know who is that rock star, who is that good singer, who is that actor, who is that wonderful motivation speaker who is going to come in next 20 years. आज से 20 साल बाद हो सकता है कि आप में से कोई एक बच्चा जो यहाँ चैट कर रहा है, जो इन्वॉल्व है इस स्पीच के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर, वो बन के आ जाए पूरा बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर, और फिर वो बातें करे कि आज से 20 साल पहले मैंने जोशी सर को सुना था. हु नोज, अगर वो याद रखे तो वही अचीवमेंट है मेरे लिए, राइट? So these are some of the traditional methods of, I must say, public speaking, which you all are always blessed with, जिनसे आप हमेशा से इंटरैक्शन करते रहे और आपको इनका चीजें मिलती रही. Now let's talk about the modern methods. So now here I would like to ask, has anyone thought of modern methods in the life? कि modern methods of public speaking क्या होगा? कभी आपने सोचा ऐसा? For that chat, actually, if anyone can just put on and they do share. All right, YouTube, wonderful. Somebody saw that. Social media handles, right? Social media. The answer is social media. Wonderful. So now, just a second, let me hide this. You said it right, that is YouTube, public speaking, and Instagram Reels. These are one of the some of the sources or the current or the modern ways of, I must say, mass communication or public speaking. YouTube, public speaking, and Instagram Reels. With this, let me come on this now. Now, recently because I'm also into discussion or interacting, meeting with people. What I've realized over the time period is YouTube has been such a great source for people that now they are able to interact with countless people. आजकल के ज़माने में YouTubers का इतना बड़ा craze है. They are so big in nature. YouTubers are so popular nowadays that they are next kind of celebrities we have in our life. हमारे बीच में आजकल YouTubers are the next kind of celebrities. You all know them. There are many YouTubers who have came up. आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले YouTube था नहीं, था तो भी there was no craze at all, right? Same way, Instagram. I'm not encouraging you to go for Instagram and use and scroll and do whatever you want to do, but believe me, Instagram is something, or Instagram Reels are something which are extremely important in our life. कहाँ? जब हम उसको, let me stop sharing this. Can you see me now? Yes. You can see my face, right? So now let's talk about this in detail, because मैं इसके बारे में बहुत बात करना चाहता हूँ कि YouTube हो गया, Instagram हो गया, और your public speaking competitions हैं, ये मैं चाहता हूँ कि बच्चे ज़्यादा participate करें. As if now, why? In today's time, we don't have an access to assemblies. We don't have a lot of access to classroom discussions. We are lacking the discussions on debates, on live debates. But if you have
if you have access to suppose YouTube or Instagram, you can be the next best public speaker. आज से कुछ साल पहले, मतलब आज से हम बात करें, when you were not there, when I was a small kid, that time filmy heroes were the only celebrities. Celebrity वही थे, public figure वही थे. For example, अमिताभ बच्चन सर, धर्मेंद्र सर, I think you might have heard the name. राजेश खन्ना जी हैं, दिलीप कुमार जी थे, ऐसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे who were just into movies. Movie stars थे. पिक्चरों में आएंगे, एक्टिंग करेंगे, and they were the only people who were stars. Then came a craze of serials. That is, जिसको हम सीरियल्स कहते हैं, प्रोग्राम्स कहते हैं या कार्यक्रम कहते हैं हिंदी में. That is, हम जब देखते हैं, there are many good serials which came up, जो आज के जमाने में तो बहुत सारे हैं. कपिल शर्मा शो का कपिल शर्मा खुद देख लो आप, द बेस्ट और दी मतलब known for his serials. तारक मेहता का उल्टा चश्मा. These are the serials which came up after movies. आज क्या हो गया है, आज की जो जनरेशन है वो बैठ के सीरियल्स को भी कम देखती है, बिकॉज विथ टाइम द जनरेशन हैज चेंज, द नीड हैज चेंज. आज हमें क्या चाहिए, हम वो दौर के नहीं है कि टीवी में बैठे रहे और टीवी में सीरियल देखते रिमोट के साथ. आज का बच्चा वो नहीं करता. आज के बच्चा क्या है, वो अपना एक स्पेस लेगा एंड दे सिट विद द मोबाइल एंड दे जस्ट स्क्रॉल डाउन. वी हैव टू एक्सेप्ट दिस. इट इज नॉट दैट मैं मोबाइल को एनकरेज कर रहा हूं, नो, आई डोंट एनकरेज मोबाइल, बट वो जनरेशन करता है. और कौन जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार है, हमने दिया है. कुछ सम एक्सटेंट दैट इज इंपॉर्टेंट, बट मेरा ये मानना है कि ब्लेम करने से बढ़िया है कि हम क्यों ना उसको प्रोडक्टिव बनाएं. हम सिर्फ ये कहें कि मोबाइल नहीं देखना, वो देखेगा. व्हाट वी कैन डू इज मेक इट मोर प्रोडक्टिव. हाउ? You want to use YouTube, use it as much as you want to use. But what you do, you become a next YouTuber in next 1 year. Give a target. आप एक अपना म्यूजिक चैनल बनाइए. आप अगर सिंगिंग सीखते हैं तो गाना गाइए, भले ही आपका सुर ताल कुछ नहीं आ रहा हो, गाइए, रिकॉर्ड करिए, अपलोड इट. There are various applications like Star Makers and others which are even paying for your contribution. YouTubers look like, I feel so good looking at the people. How have they achieved this? People are cooking in the kitchen and they're uploading the videos and they're having huge fan following. लोग खाना बना के videos डाल रहे हैं and they're getting a huge crowd. People are singing. When I was in college, I remember when I was in college, so I don't remember the name of that girl who used to sing with a guitar. She was a school girl. वो गिटार के साथ गाना गाती थी और अपलोड करती थी वीडियोस YouTube में, and she became so popular. When they can do, why can't we do it? Make this as a hobby rather than just playing video games and wasting time. Understand, recognize your strengths. You all, the new generation, is wonderful with editing. You are wonderful with video editing, with videography and all that. आप लोगों से बढ़िया कोई नहीं है. Still, believe me, when I face challenge, because I also do with all this YouTubes and interviewing people and interacting with them, when I feel problem, when I face challenges with editing and recording, simple solution is I either go on YouTube, या अगर time हो मेरे पास, what I do, I call up my children and I ask them कि बेटा ये हो गया है, how can we solve? And they have a lot of answers. Sir ये करो ना, sir ये करते हैं, sir ऐसा करते हैं. अरे, I never thought of it. And children having answers to that. This is the reality of today's generation. आप लोगों के पास इतना सब कुछ आंसर्स हैं. ओनली प्रॉब्लम जो मैंने क्या कहा आपको पहले, कि हम सही समय पर सही बात नहीं करते हैं या सही समय पर सही काम नहीं करते हैं. Whatever you do, for example, you sketch. There is one of these sir whom I know. What he do is he sketches, or sketch में, I don't know how he speeds up the YouTube का channel. Right, drawing channel like Saurabh Joshi. So yes, they speed up the video. जैसे अगर मैं फोटो बना रहा हूँ वीडियो, I'm making a sketch and that sketch takes 10 minutes. I can complete that in 10 seconds, 30 seconds. जल्दी जल्दी भगा दिया और sketch बन गया. You can take your own sketching classes, but all this needs your public speaking. जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप इंटरैक्ट नहीं करेंगे, लोगों के अंदर वो जज्बा नहीं आएगा. If you sing good, आपको लगता है आप गाना गाते हैं, गाना गा के डालिए.
आपको लगता है कि आप अपना कोई सपोज आप कहीं जा नहीं पाए, thankful, we should be thankful to God that many of us are living in the place known as Rajasthan, जो पूरा फोर्ट्स म्यूजियम से भरा हुआ है। यहाँ की जगह जगह पर आपको फोर्ट्स और हिस्ट्री मिलेगी। Why can't we do that? Just go in nearby areas, या आपके घर के आसपास आप, if you live in the villages, रूरल एरिया में अगर आप रहते हो, तो आपको तो और फैन फॉलोइंग मिलेगी। start making your videos with your voice कि today we are here and I welcome you all to this, subscribe to my channel and all that। ये क्या हो रहा है? आपका जो डर है वो हट रहा है ना, तो आपको देख के हंसने वाला है ना, आपके सामने क्राउड है 5000 की जो आपको हंसी मजाक उड़ाएगी। You don't know anybody। आपने वीडियो बनाया, अच्छा वीडियो बनाया, इंटरैक्टिव वीडियो, you uploaded that on the channel and believe me, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैंने देखा है, बच्चों से सीखा है। दे से कि सर अगर हम नॉर्मल स्कूल में खड़े होकर के बात करते हैं ना, in normal interaction, children or my friends make or they laugh on me, but sir मैंने देखा है कि when I make a YouTube, they appreciate me and they help me। I don't know, होता होगा, आपके साथ भी हो सकता है कि क्योंकि बच्चे या आपके जनरेशन उसको एक्सेप्ट करती है, so क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। IGTV, you can make 3 to 4 minutes of your videos on any good topic, any relevant topic, put that in social media, make it, let it go on the reels and IGTVs and Facebook videos। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आज जो मैं कर रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, मैंने किसी को भी देखा नहीं है आप में से, ना तो हम हैंडशेक कर पा रहे हैं, और आजकल तो हैंडशेक भी प्रोहिबिटेड है बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल दैट स्टफ, बट व्हाट आर वी डूइंग? वी आर इंटरैक्टिंग। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, व्हाट इज द सोर्स? ऑनलाइन, वर्चुअल सोर्स, और ये वीडियो जहां भी जाएगा वर्चुअल होगा। सो क्या मैं घबरा रहा हूं? हो सकता है कि अगर आप सामने होते, मतलब 500-700 स्टूडेंट्स या बहुत जने होते सामने, मैं शायद घबराता, अरे बाप रे मैं कैसे बात करूं, मैं बहुत सारा पानी पी के बात करता, आई ट्राई टू लूज द आई कांटेक्ट विद यू ऑल। बट अभी क्या डर है? मेरे सामने मेरा कंप्यूटर है, उसमें एक यहाँ पर कैमरा है, उसको देख के बात करनी है। व्हाई डू आई नीड टू गो ऑन hurry, or why should I get tensed? I don't have any fear। Same way you can reduce your fear, and believe me, क्या पता आप कहां से कहां बन जाओ, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है आप लोगों को समझाने के यूट्यूबर्स का क्या क्रेज है। इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं हम उन्हें, they have many ways of getting popular, but with all this, believe me, one thing is important, what are you focused at? मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग करके बैठिए और कुछ नहीं करना, नो, because education in today's time is not only about classroom studies, it is more than that, and it is something about increasing your own knowledge। So do all this, go on making your reels, productive reels, not that funny joke wala reels wherein you get a lot of good potentials। एक्ट करिए, अगर आप एक्टिंग का क्रेज रखते हैं, एक्ट एंड पुट योर यूट्यूब वीडियोस। मतलब you can talk to any celebrity nowadays by just hashtagging yourself or your that name। You can tag any celebrity and you don't know, they might see you। So do all this, these are the modern ways of communication, modern ways of public speaking, go for it, please go for it। With this I would like to get on to another slide, that is stage fear। ये होता है सबके साथ, we all face this, even when I started I remember I was the same way। वो बाप रे अब मेरा क्या होगा, जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। these are the reason, क्या होगा और क्यों होता है ये चीज, हम क्यों घबराते हैं, why do we scared or why are we scared of public speaking? The answer is this, fear of what they think, I'll explain who are they, and fear of being incorrect। ये दो कारण हैं, मेन कारण, जिनके कारण हम किसी भी स्टेज फियर का शिकार हो जाते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। व्हाट आई सेड, fear of what they think, who are they are the audience, they are our friends, they are listeners। for example अभी मैं बात कर रहा हूं and
what fear I may have is, क्या पता गुप्ता सर क्या सोच रहे होंगे, क्या पता any child for example that way, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में. I can see Jaya ma'am also, क्या पता Jaya ma'am क्या बोलेंगे मेरे बारे में, what she will think. This is the fear. uh, Now the answer to this is, do you know what he or she will think? You don't know. Then why are you bothered about it? जब आपको पता ही नहीं कि वो क्या सोचने वाले हैं, तो आप क्यों सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे? And who can eliminate this thing? You. सिर्फ आप ये डर को हटा सकते हैं, बिकॉज इस डर का कोई बेस नहीं है, इस डर का कोई रिलेवेंस नहीं है, इस डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. वो क्या सोचेगा, वो उसका काम है. What you have done is the miracle. That is the reason I started my discussion with, believe me, you are the best. आपसे बढ़िया कोई नहीं है. अभी मैं ये बात कर रहा हूं, whenever I am giving a speech, मैं ये सोचता हूं कि मुझसे बढ़िया इस समय कोई हो ही नहीं सकता. तभी मैं बात कर पाऊंगा. मैं सोचूं कि अरे नहीं, गुप्ता सर को मुझसे ज्यादा पता है, जया मैम इज knowledgeable than me, या anyone, any other name that is too knowledgeable than me, मैं तो गया काम से, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा. क्योंकि जब मुझे लगेगा कि वो मुझसे ज्यादा knowledgeable हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं है, of course they are knowledgeable than me, you all must have been, there are many people who are 10 times knowledgeable than me, but मुझे अपने आप पर भरोसा तो हो. अगर मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं होगा, मैं यही सोच में रहूं कि वो सब मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, तो मैं लड़ूंगा कैसे? मुझे बात करने के लिए, मुझे अपनी पॉइंट रखने के लिए कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि मैं बेस्ट हूं. सेकेंड, आई शुड रिकॉग्नाइज, आई शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग. इफ आई हैव अ गट्स, अगर मैंने ये हिम्मत लिया है बात करने का, तो मैं बेस्ट हूं. बिकॉज अगर मैं आज तक यही सोचता आया था कि अरे मुझे तो बात नहीं करनी, आई डोंट वांट टू स्पीक, सॉरी, तो मैं क्या कर रहा था? मैं वो फियर से दूर भाग रहा था. एंड बिलीव मी, आप एक दो बार अगर बात कर लेंगे, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कर लेंगे, थर्ड टाइम डर होगा ही नहीं. दिस प्रॉब्लम इज व्हाट दे थिंक. रिमूव दिस. सेकेंड प्रॉब्लम विच आई आस्क स्टूडेंट्स एंड आई गॉट टू नो इज, सर हम गलत हो गए तो? गलत कौन नहीं होता? रिमेंबर दिस थिंग, ह्यूमंस आर मेड टू, और ह्यूमंस आर हियर टू मेक मिस्टेक्स. हम सब गलती करने के लिए ही बने हैं. नो वन इज परफेक्ट, और हो ही नहीं सकते. ऐसा कोई नहीं हुआ जो परफेक्ट हुआ हो. एंड ट्रस्ट मी, all the experiments are done on the wrong and right itself. For example, अभी जो वैक्सीन्स बन रही हैं, दवाइयां बनती हैं, क्या होती हैं? These are the learning from the mistakes. ऐसा नहीं था कोरोना का आते ही हमारे पास में तैयार वैक्सीन जी लगा दी, नहीं किया. हम लोगों ने कितना रिसर्च किया होगा, हम मतलब गवर्नमेंट ने, मैं तो नहीं करता रिसर्च, गवर्नमेंट ने किया होगा. Why should I do? I don't know anything about chemistry and all that. I don't know about that. But गवर्नमेंट ने न जाने कितने रिसर्च किए, कितनी गलतियां हुई होंगी, तब जाकर के गवर्नमेंट अब जाकर के आई है कि हाँ ये वैक्सीन का ये बेनिफिट है, या ये दवाई तो अभी तक चल रही है. तो दवाई चल रही है मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट बैठी है दवाई अपने आप आएगी. दवाई नहीं आएगी. मिस्टेक्स हो रही हैं, गवर्नमेंट ट्राई कर रहे हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज ट्राई कर रही हैं, कितनी फेलियर्स मिले होंगे, तब जाकर के मिस्टेक्स के बाद लर्निंग मिलती है. और अगर उसी गवर्नमेंट एजेंट के साथ में मैं जाके बात करूं, नहीं दवाई क्या है बताइए, देन दे हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कि भैया हम 200 बार फेल हुए हैं तब जाके बना है. मैं चुप हो जाऊंगा, क्योंकि वो उतना फेल हुए हैं. मैं कितना फेल हुआ हूं? 0. और मैं बोलूं कि नहीं दवाई अच्छी नहीं है, हु आर यू टू स्पीक? वो तो 200 बार फेल हुए हैं. सेम वे कोई आपको ये कहता है कि अरे तू अच्छा स्पीकर नहीं है, उसको बोलना भैया मैं 50 बार फेल हुआ हूं, आप कितनी बार फेल हुए हैं? And that will be the right answer. Believe me, फेल होना पड़ेगा. फेल होना पड़ेगा मतलब ये नहीं है एग्जाम में लिखे नहीं है और बैठ जाए, सर मैं फेल होऊंगा देखते हैं क्या होता है. नो, नॉट दैट वे. ट्राई. जो आपको नहीं आता है उसमें फेल हुई है, तभी आप सीखेंगे. और ये कोई साइकोलॉजिकल या बहुत फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये मैंने भी सीखा है. खूब बार फेल हुए है. मैं एंकरिंग करता हूं, मैं होस्ट करता हूं, कई बार ऐसा होता है कि मैं लाइन भूल जाता हूं कि मुझे अब क्या बोलना है. हो जाता है, क्या हो गया, इंसान हूं. एंड दैट टाइम क्रैक अ जोक, कुछ भी बोल दो, हंसी मजाक करो, लोग लगता है अरे वाह वाह सर तो मजाक कर लिया. मजाक नहीं, मैं भूल गया था. इट हैपेंड इन कपिल शर्मा आल्सो. आई फॉरगॉट अबाउट द कपिल शर्मा. कई बार क्या होता है, भूल जाता है शो के बीच में. इवन ही इज अ मैन, ही रिमेंबर्स एवरीथिंग एंड ही स्पीक्स. भूल जाता है. व्हाट डू, वो मजाक कर लेता है, जोक मार देता है, और उस जोक के टाइम वो ट्राई करता है टू गैदर द इंफॉर्मेशन कि मुझे क्या बोलना है. हो गया काम. इट इज वेरी सिंपल.
इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट चक्कर क्या है वो कि वो क्या सोचेंगे, वो जो सोचने वाली बात है ना, दैट इज आवर एनिमी। उस वो को तो हटा दो, कुछ नहीं है सामने, सामने हमको सोचना है कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, उस समय के लिए विथ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, राइट? सो विद दिस, let's again see some slides. Now, this is the answer to your all the questions. Self confidence. This picture you all must have seen कि एक बिल्ली है, बिल्ली अपने आप को देख रही है रिफ्लेक्शन में, और क्या दिख रहा है उससे? टाइगर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्ली को घमंड हो गया, घमंड नहीं हुआ, बिल्ली है छोटी, बिल्ली की क्या हिम्मत है, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर मुसीबत आएगी तो मैं टाइगर के जैसा लड़ूंगा। सेम वे अब आपको भी अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसको तो आप गांठ बांध लो कि इफ यू डोंट हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यू आर गॉन, आपके पास कुछ नहीं बचा, राइट? लेट्स सी द अनदर स्लाइड। नाउ this is the what I have realized in my life journey is these are the ways of getting this, reducing this stage fear. सबसे पहला काम होता है स्टेज फियर को हटाने का, पार्टिसिपेट। कुछ मत सोचो, पार्टिसिपेट कर लो विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, जस्ट पार्टिसिपेट। आपको आता है, नहीं आता है, आपको कोई चीज समझ में आई, नहीं आई, गो फॉर इट, आप पार्टिसिपेट तो करिए। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे आपको क्या पता क्या है क्या नहीं है। पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग दैट यू गेट। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? आपको हर जगह पार्टिसिपेट करना है। Now, in this, I would like to give you a example. I think you all know this song "Teri Mitti Mein Mil Jawa," right? This of movie Kesari. उसके जो song writer थे, lyricist, Mr. Manoj Muntashir. I was listening to his one of the interview. He said कि जब उन्होंने start किया था ना अपना practice of writing, then he met one of the famous, मतलब world famous भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। वो इंटरव्यू में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ही इज गिविंग दैट इंटरव्यू, दैट वो जब मिले थे तब उनसे कहा गया कि आपको भजन लिखना आता है क्या? ही वॉज अ सॉन्ग राइटर, ही सेड यस। उन्होंने क्या कहा? यस आई नो, मैं लिख लूंगा सर भजन। तो उन्होंने कहा लिखो। उन्होंने भजन लिख करके दिखा दिया कि मैं भजन लिख सकता हूं, देर एंड देर ऑन द स्पॉट। और ये उनका रिकॉर्डेड इंटरव्यू में है कि मुझे नहीं आता था, मैंने लिखा। हाउ हैज दैट केम अप? ही पार्टिसिपेटेड। अगर वो बोलते नहीं सर मुझे भजन तो लिखा ही नहीं, मुझे नहीं आता, तो क्या आज वो यहां पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। उन्होंने ट्राई किया, ही रोट दैट भजन, ही गेव, इट वाज सक्सीडेड, उनको पसंद आ गया, फिर ऐसे ही काम मिलते गए। आपको सबसे पहले तो लाइफ के अंदर पार्टिसिपेट करना है विदाउट एनी फियर। किसमें करना है? हम बात कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग, तो एनीथिंग दैट हैज टू डू विद द पब्लिक स्पीकिंग, आपकी डिबेटिंग है, आपकी एनीथिंग, जैसे हमने बताया अभी वेरियस 7 to 8 मोड्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वी हैव डिस्कस्ड। पार्टिसिपेट ऑलमोस्ट इन एवरीथिंग, जो भी आपके स्कूल में आता है सब कर लो पार्टिसिपेट, देखा जाएगा क्या होगा। अब जब पार्टिसिपेट किया है, कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? सो सबसे बेस्ट तरीका है नॉलेज गैदर करने का, रीड अ लॉट, पढ़ना तो पड़ेगा। अब पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप मैथ्स के एल्गोरिथम्स और सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस। पढ़ाई बहुत बड़ी चीज है। पढ़ाई इज समथिंग व्हिच नेवर एंड्स। हाउ? मैंने लाइक आई हैव लेफ्ट माय स्कूलिंग अराउंड लॉन्ग बैक, बट इस प्रेजेंटेशन में बात करने के लिए मैंने पढ़ाई करी है, मैंने रिसर्च करी है, ये भी तो पढ़ाई है। व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो लर्निंग व्हिच आई एम डूइंग, राइट? सो आई एम रीडिंग, आई रीड, यू ऑल रीड, बिकॉज आपने अब हथियार तो बोल तो दिया कि मैं लड़ाई करूंगा, अब लड़ाई करने के लिए हथियार चाहिए, हथियार चाहिए, उसके लिए हथियार चलाना आना चाहिए। तो रीड अ लॉट। वंस यू रीड, improve your language, focus on language. Now here I would like to give you all a hold. Believe me, focus on at least one language. जब तक आप एक लैंग्वेज में फोकस नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। आपको एक लैंग्वेज में तो फोकस करना ही पड़ेगा। फोकस ऑन वन लैंग्वेज, एनी वन लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी, फोकस ऑन दैट। बिकॉज जब तक आप एक लैंग्वेज को एक्सपर्टीज नहीं लेंगे, आपकी लैंग्वेज क्या हो जाएगी? हिंग्लिश कहलाएगी। हम वहां गया, वो वहां से आए, अपन मिला, नो, दिस इज नॉट राइट वे टू टॉक। व्हेन यू आर टॉकिंग इन हिंदी, यू शुड हैव अ गुड कमांड ओवर दैट,
or when we talk about the English, have a wonderful command over English. One language to choose and practice for that. Listen, ये अगला है. रीड तो कर लिया आपने, अब आप बड़े बड़े लोगों को सुनिए, बिकॉज जब तक आप सुनेंगे नहीं आपको कुछ ज्ञान नहीं मिलेगा. लिसन टू पीपल, ट्राई टू बी अ गुड लिसनर. आप सुनिए, उसके बाद आपके पास जब भरपूर नॉलेज आ गया, ट्राई करिए. फेल तो होना पड़ेगा, फेल होंगे आप, फर्स्ट सेकेंड टाइम आप फेल होंगे. एक्सेप्ट दैट फेलियर विद लॉट ऑफ एंजॉयमेंट. मैं फेल हो गया, मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैंने तैयारी करी थी, मैं फेल हुआ, कोई बात नहीं. उस फेलियर का रीजन पता करिए. कैसे मालूम पड़ेगा? उन फेल करने वालों से पूछिए कि मैं फेल क्यों हुआ. राइट? दे विल गिव यू लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स. वर्क ऑन इट and again restart. Restart means again participate, again read, again improve language, listen. Either you fail or pass, again restart. This cycle should go on, go on, go on. ये प्रैक्टिस करते रहेंगे. जो मैंने एरो बनाया प्रैक्टिस का, इफ यू गो ऑन डूइंग दिस यू विल सक्सीड, और एल्स देयर इज नो अदर शॉर्टकट टू ऑल दिस. बिलीव मी, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका. आई होप टिल नाउ यू आर विथ मी. Now let's okay, this video we'll see, if we have time we'll see at the end. Now this is one of the crux which I would like to talk to you all. That is, how can you believe in yourself and how can you have a wonderful time? Now this is for friends. Suppose you believe that you are the best. Every one of you believe you are the best. उसको करने के लिए सबसे पहले you talk to yourself. Talk to yourself का मतलब ये नहीं कि आप अकेले बड़बड़ा रहे हैं, बड़बड़ाना नहीं है. आप अपने आप को थोड़ा समय दीजिए. आप ये पता करिए कि मैं किस में अच्छा हूं, मैं किस में बुरा हूं, मुझे किस चीज में अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है. हम सब मानते हैं कि हम सबको बहुत चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, एंड देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ इंप्रूवमेंट. हम सबको जरूरत है काम करने की, बट वो क्या है, किस चीज में काम करना है, वो काम क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. टॉक टू योरसेल्फ, क्वेश्चन योरसेल्फ, अपने आप को चैलेंज करिए हमेशा. इसके बाद आप अपने आप को एक स्पिरिट, अपने आप के लिए एक चैलेंज रखिए लाइफ में कि मुझे वो अचीव करना है. मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, मैं कह रहा हूं मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स. But here comes the role of a friend. Friends listen, help each other. For example, if a friend commits a mistake, वो fail होता है, normally friends क्या करते हैं, B friend क्या करेगा, तू तो failure है, तू तो हार गया है, तू तो हार गया. No, don't laugh on that. Appreciate his failure or her failure. क्यों? क्योंकि उसने participate किया, आप तो वो भी नहीं कर पाए. You have at least participated in that. He or she has participated. Please help your friends. Let them get that achievement. With this, let's see this next slide. One of the important element of public speaking is connecting to audience. इसके बिना आप fail हो. You are not a good speaker, right? Which I am all trying to do. I am trying to sometimes try to put questions, sometimes try to show you videos, sometimes try to let you chat. Why am I doing? The reason is interacting or connecting to audience. आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ऑडियंस कौन है. इसलिए मैंने सर को पूछा कि आई थिंक स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड एवरीवन इज अ क्राउड. इसका एग्जांपल देता हूं. चिल्ड्रन अंडरस्टैंड until unless for connecting to audience you don't know who is your audience, you cannot do it. For example, सपोज मैं आपको एक टास्क दूं कि आपको एक डेनिम जीन्स का एक एड बनाना है, या हाँ चलो डेनिम जीन्स का एक एड बनाना है, राइट? और मैं आपने अच्छा एड बना के दिया, वंडरफुल एड. नाउ आई आस्क यू कि आप मुझे बताओ कि ये एड हम किस चैनल में चलाएं. देन डेनिम का एड है, ऑटोमेटिकली यू गो फॉर दी आइदर स्पोर्ट्स और यू गो आइदर फॉर दी सपोज म्यूजिक चैनल समथिंग. बट इफ यू से सर हम तो इसको चलाते हैं आस्था चैनल या किसी में, वहां चलेगा क्या? या आप अगरबत्ती का ऐड अगर चलाओ आप एक म्यूजिक चैनल में, क्या वहां चलेगा? अगरबत्ती का ऐड कहाँ चलेगा? आस्था चैनल में, जहां भगवान के रिलेटेड एक्टिविटीज हो रही हो.
आपका ऑडियंस कौन है, आपको उसके हिसाब से अपनी चीजों को प्रिफर करना पड़ेगा. मेरे ऑडियंस अगर बच्चे हैं, एंड इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फिलोसॉफिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च की एक्स यूनिवर्सिटी ने ये रिसर्च किया एंड दिस एंड दैट, विल यू एबल टू डाइजेस्ट दैट पार्ट? नो. Suppose my audience is commerce background student, and if I start talking about chemistry, logicals and molecules and that, क्या उनको समझ में आएगा? नहीं आएगा. मैं भले कितना अच्छा स्पीकर हूं, पर मेरा ऑडियंस से कनेक्शन ही नहीं बैठ पा रहा है. जैसा ऑडियंस है वैसा आपको होना ही पड़ेगा. Because until unless you don't be like an audience, you are not able to achieve your targets done. Second, ऑडियंस बनने के बाद आप उस ऑडियंस के हिसाब से बात करिए. टॉक अबाउट देम. जैसे हम अभी पब्लिक स्पीकिंग में बात कर रहे हैं, आई विल नॉट टॉक अबाउट कॉन्फ्रेंसेज, आई विल नॉट टॉक अबाउट होस्टिंग एन इवेंट. मैंने आप लोगों से कोई कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करी, मैंने आप लोगों से कोई कॉर्पोरेट इवेंट की बात नहीं करी, मैंने आप लोगों से स्कूल लेवल की बात करी. मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप जाकर के 26 जनवरी में पीएम का स्पीच लिखिए. नो, I talked about interacting in your school because I have to talk about you. अगर मैं बच्चों से बात कर रहा हूं तो मुझे बच्चों के लेवल की बात करनी होगी. सेम इफ आई टॉक अबाउट कॉर्पोरेट कल्चर का एक सेमिनार है, देन आई विल टॉक अबाउट कॉर्पोरेट लैंग्वेज, या नौकरी वालों के हिसाब से बात करूंगा. सो ऑलवेज ट्राई टू मिंगल अप विथ योर ओन पीपल, राइट? इन्वॉल्व देम. We try to involve. On digital platform, the involvement is a bit low because we have to keep many things into consideration. But अगर live session होता है, then we can involve audience in many ways, plays, games, activities, and many ways. But involve the audience. नहीं तो क्या होगा? Audience will sleep in a wonderful pillow near them. Last or the next point is this: clarify your message. Message clarification is extremely important. Now what is this? Clarify your message का मतलब होता है कि आपको अपनी बात को properly communicate करना है. You have to clarify, you have to justify your statements. जो मैंने बताया ना, facts, figures, and with all sort of feedbacks, you have to clarify what you want to say. Clarification begins with the setting of objective. मैंने जब पहले आपसे बात करी थी, first when I opened this slide, मैंने क्या कहा था कि I will not force anybody to introduce yourself, because that time the clarification of my message was कि मैं चाहता हूं कि सेमिनार के बाद बच्चे पब्लिक स्पीकिंग के लिए encourage हों. I want at least 5 to 10 children to get into public speaking. मैं ये चाहता था. That is the clarification of message. आप चाहते क्या हैं उस सेमिनार से, आप चाहते क्या हैं उस मैसेज से, आप चाहते क्या हैं उस कॉन्फ्रेंस से? दैट इज द क्लैरिफिकेशन ऑफ मैसेज. यू शुड लेट योर ऑडियंस नो कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस, एंड लेट देम नो व्हाट, और ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. बिकॉज until unless our expectation do not meet, we will not be at same level. सही है? नहीं है? And last is give your best. सब कुछ जितना आपके बस में है सब दे दो. जो आपसे हो पाता है वो आप दे दीजिए. There is no problem in that. That is in sense of communication, interaction, involve with children. But until unless you don't give your best, you cannot get the best from everyone. इसके बाद क्या होगा? Who knows? देखा जाएगा. Whatever is the result, we are not concerned about the result. But जो भी होगा अच्छा ही होगा. Right? With this, anybody who would like to ask or who would like to share something, so it depends on your chat box or what is the way you can share your views, or you want to ask me something. If possible, I will try to answer those questions also. Let's see how things go on. Let me just stop the sharing. Yes, sir. I hope the session was good enough and knowledgeable to your extent. Anything that which I can answer something. Yeah, I will start asking few questions which are generally asked by the audience. Right. Yeah, the very first question is very simple question: how the body language is important in public speaking? Right, sir. Body language. Now here the term body language is like
इट्स इंग्लिश लैंग्वेज विच आई एम स्पीकिंग, मैं अच्छा हूँ, ये हिंदी लैंग्वेज है, वैसे ही मेरी एक बॉडी की लैंग्वेज है, मेरी बॉडी की एक भाषा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेशन ले रहा हूँ एंड इफ आई सिट ऑन दी सोफा रिलैक्सिंग, सेशन ऐसे लू, अब समझ जाना, अब समझ गए, what am I doing? My language is so inconvenience. मैं कितना एक अनसिस्टमैटिक हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ जो दूसरों से इंटरेक्शन करते समय मैं उनको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा हूँ. What am I doing? If suppose I am sitting in this posture, of course मूवमेंट होगा, अब मेरा बॉडी का मूवमेंट, मेरा हाथ का मूवमेंट तो होगा ही होगा, बट आई कैनॉट स्पीक दिस वे, आई कैनॉट स्पीक दिस वे. बट अगर मैं 90 डिग्री में बैठा हूँ एंड इफ आई स्पीक, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम गिविंग अ ड्यू रेस्पेक्ट टू माय ऑडियंस. बॉडी लैंग्वेज का सब बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज वो फिगर आपको याद है एवरीवन, दैट 7% इज व्हाट यू स्पीक, 93% is how do you look, non-verbal communication. Non-verbal involves your body, your hand movements, your eye movement, your vocabulary, your everything. How do you react? ये सब कुछ आपका एक non-verbal communication है, and ये कितना important है? 93% important है. Yeah, I think thank you. answer is Thank you, sir. Then my next question is, this is also very simple and very effective. right. How public speaking affects our earning in future? Wonderful question. Wonderful question. It is helping me a lot. I can say this to everyone, every child. Sir knows this, but it is helping me. How? Now, this is wonderful, which I actually missed out in my slide. Thank you so much, sir, for bringing this, because I missed this. And, public speaking ke through, you can be anything. The best example for public speaking is our own Prime Minister. Look at his speech. Look at his speech. So convincing. Look at any leader. वो लीडर कैसे हैं? हम सोचते हैं कि लीडर तो ऐसे ही बन गए, लीडर ऐसे ही नहीं बनते. The first requirement I must say of any leader is the convincing. Convincing का कैसे होगा? Speaking skills. आपको अगर बोलना नहीं आता, आपको अगर इंटरेक्शन करना नहीं आता, तो आप लीडर के आसपास भी नहीं जा सकते. जिनको बोलना नहीं आता वो क्या करते हैं? बैठ के सुनते हैं. और जिनको बोलना आता है वो उन बैठ के सुनने वालों को वहां बैठ के सुनाता है. Who is the leader? Second, which is very common in sense of job, is you can either be in the media industry. Media is huge industry. जिसमें आप PR काम कर सकते हैं, आप रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, न्यूज रीडर्स हैं. You can get into anything. Second, which I do a lot, is you can get into hosting the events. आप corporate events हैं, birthday parties हैं, आप बहुत अलग अलग तरीके के events को host कर सकते हैं. The way students you do in your annual functions, in your assemblies, आप लोग hosting करते हैं ना, वो तो छोटा लेवल का hosting है. वो ही आपको एक सेंस ऑफ डेवलपमेंट, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि आप आगे जाकर के एक अच्छा होस्ट बन सकें. ऐसे कई बहुत सारे लेवल्स हैं. उसके अलावा आपको मेरे एक बात ध्यान रखिए, आप जब तक बोलना नहीं सीखेंगे, आप कहीं पर एम्प्लॉयबल या किसी को एम्प्लॉयमेंट दे भी नहीं सकेंगे. क्योंकि अगर आपको बोलना नहीं आता तो लोग आपसे इंटरेक्ट कैसे करेंगे? अब बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप तू तड़ाके से बात कर ले, नहीं. जब तक आप अच्छे से बात नहीं करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. और जब तक आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपके साथ कोई काम नहीं करेगा. राइट? तो काम कराने के लिए भी आपको बोलने आना चाहिए. This is what my answer is, sir. Yeah, thank you, sir. Thank you. My next question is that we start comparing each other, that he's good in that, he's good in that. How to convince ourselves and what act we should do? Right, sir. In convincing ourselves, many of my friends, my own friends, they are good in bodybuilding. They are wonderful. They are good-looking guys. Look at me. My hairs, they are gone. I am not that that handsome. My beards are growing. Why do I keep this way? Because I might not be good, or I must not having that wonderful, that handsome looks. But I am good at something. So why should I feel bad for my hairs? Why should I feel bad for that? सबका है. अगर मेरे बाल नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ मेरे बाल हैं. And if I'm not having my hairs, will that impact my career? With such like baldness, I must say, टकलापन के साथ भी मैं host करता हूँ events को. I go on event, I interact people. Same way, सबके साथ कमियां हैं. कोई लंबा है, कोई छोटा. Every one of us knows this. The problem is, हम इसके लिए मैंने कहा ना, talk to yourself. अपने आप को पहचानिए. आप अपने आप से बात करिए. ये पता करिए कि मैं कितना अच्छा हूं, मैं कितना बुरा हूं.
बुरा भी होना बहुत जरूरी है, पता करिए कि मैं कितना बुरा हूं. I wanted to show you all one video, पर वो वीडियो टाइम के कारण दिखा नहीं पाया, but that was all about this. कि how do you talk to yourself? If possible, I'll share that video link, sir, with you. You can share it on with the children, because that is 3-minute video, but वो इतना important है to talk to yourself. अपने आप से इतना बात करिए ना कि कोई आपको बोले कि अरे नहीं नहीं आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपको आंसर पता होना चाहिए कि नहीं नहीं मुझे पता है कि मैं कैसा हूं और मैं जैसा हूं मैं परफेक्ट हूं, बिकॉज आई एम परफेक्ट. मैं हूं बिल्ली, लेकिन अंदर से कैसा हूं? आई एम अ टाइगर इन माई सेल्फ. दैट कॉन्फिडेंस वी ऑल शुड हैव. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Now, nowadays, a profession is coming up as a RJ. Okay. Right. So, what about this and how it is different from podcasting? That you are doing? Right, sir. Podcast is internet radio. It's, I must say, it's same kind of, but not exactly same. Why not same is podcast is something very new in India, right? So podcast basically means a internet radio. है वो रेडियो ही, लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेट चाहिए. पहले के जमाने में हमारे पास में रेडियो था कि हम उसको चालू करेंगे, आकाशवाणी आएगा, एफएम आएगा, एंड वी हियर दैट. लेकिन पॉडकास्ट आपके आकाशवाणी या आपके उसमें नहीं आएगा. पॉडकास्ट आपके मोबाइल में आता है और आपको उसके लिए इंटरनेट चाहिए. Nowadays, पॉडकास्ट के अंदर भी देर आर मॉडरेटर्स हु आर नोन एज आरजेस, जो हम आरजे रेडियो के लिए कहते हैं. फॉर पॉडकास्ट वी कॉल देम पॉडकास्टर्स और मॉडरेटर्स. व्हाट दे डू, सपोज ये अभी हमने रिकॉर्ड किया, सो इन दिस Gupta sir was the moderator who was asking questions. So if we record this, because it's recorded, if we extract the mp3 or audio out of this, और अगर हम उसको पॉडकास्ट में डाल दें तो वो हमारा रेडियो में चल गया. और उसका कौन मॉडरेटर था? गुप्ता सर वाज द मॉडरेटर. सो इट्स काइंड ऑफ रेडियो ओनली. लेकिन उसमें क्या है कि आरजेस नॉट बिकॉज सी दैट इज ग्रोइंग. अभी तक पॉडकास्ट इज वेरी वेरी न्यू. इट इज जस्ट अराउंड 10 years ओल्ड नाउ. तो वो ग्रो बहुत कर रहा है और रेडियो धीरे धीरे अब खत्म हो गया. तो पॉडकास्ट की जब बढ़ेगी धीरे धीरे, तो इफ यू आर अ गुड स्पीकर, आई मस्ट से यू वन थिंग, देयर इज अ शो known as I don't like this is a problem. See again, I don't remember the name. Not a problem. अगर मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं. तो उसमें मैं अब टेंशन में आ जाऊँ, बाप रे मैं नाम बता नहीं पाया, कोई बात नहीं. There is a guy, I don't know the name, good one, but उसका जो चैनल है उसका नाम है Beer Biceps. That talks about the motivation with various scholars. जैसे they have talked to Arnold Schwarzenegger, spoken with many big time celebrities. तो वो उसमें जो उसके होस्ट हैं, what yes sir, Allahabadia. Yes, someone wrote this. Kaushal Kalal, Ranveer Allahabadia. Thank you Kaushal. Thank you Kaushal Kalal. See, our children know them very well. So Ranveer wrote that. You know, that is a wonderful podcast. उसमें वो क्या करता है, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखिए. He speaks throughout in English. He has interviewed many big celebrities. तो अगर आपको बोलना आता है, you can be the next podcaster. You can interview with many people and you can earn a lot of money. Because अगर आप YouTube भी चलाते हो, you all know it. Children know it better. YouTube can give you a huge money. There are many ways. Instagram में पैसे मिल रहे हैं आजकल by making a celebrity or making an influencer. Yes, sir. Thank you very much. Thank you. It was a wonderful session by Mr. Indra Joshi, and we learned a lot. And the best thing is that you just communicated in a very simple language so that we can understand. So I move to Jasprit ma'am. Jasprit ma'am, please. Yeah. Thank you, Mr. Joshi. Thank you so much. And only I won't say much, and you have almost covered everything. It is very, very important to do the SWOT analysis. अपने आप से बात करना is very, very important. First of all, हर एक इंसान को अपनी strength, अपनी weakness जानना बहुत ज़रूरी होता है. ये तभी possible है अगर आप अपने आप से बात करें and you keep listing them and keep a track, and then wherever you find an opportunity, try to utilize those opportunities and always keep it in mind. जहाँ पर threat है आपके weakness को, you have to provide protective shield around that, and there is nothing wrong to fail. It is always good to fail, but carry home a learning lesson.
If you don't learn from your mistake, then yes, it becomes dangerous. It becomes against your personality. But if you are able to understand what is the lesson learned from those mistakes, you go one step ahead. It is always there. You learn from your mistakes. And today he has already shared so many options. It is always good to nurture your hobbies and use them along with your profession. These hobbies will add on to your earnings. And now CBSE is also laying lot of importance on the internship courses. The points will be given to the students, and that can be achieved only when you can work on your own talents and work on your hobbies. Today there are lakhs and lakhs of people who have done 10 CGPA BTech and roaming around, but they don't get selected. Why? Because they are either lacking in the public speaking, or they are lacking in some emotional quotient. So in order to make up and have an edge over the others, it is always important to nurture and polish your hobbies along with your profession. That is the one thing which will really take you a long way. And Mr. Joshi, it was very informative. You actually covered a lot of the practical aspects which every child should also utilize it. And I'm very happy that all the people, all those who attended this workshop and this webinar, I'm sure they will carry home some of the practical tips. And more than practical tips, these takeaways should be incorporated today onward. So that is my humble request to everyone. And thank you so much, Mr. Gupta and Mr. Joshi. Thank you so much for Thank you. motivating everyone. Thank you, ma'am. Thank you, Mr. Joshi. Thank you. Thank you.